Welcome to ASHTACON 2020, 5th International RCI approved and WHO registered Green Conference, because going green is the need of today and tomorrow. On behalf of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research, we are deeply elated and offer you our most grateful welcome. Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research is working in the field of disability for the welfare of persons with disabilities. The institute is the first self-finance institute throughout the North India to run the BSLP program. The institute is also running RCI certified bachelor's and diploma program in special education in autism spectrum disorder, in cerebral palsy, deaf blindness, hearing impairment, intellectual disability and visual impairment. As we all know that we have gathered on the occasion of International Cochlear Implant Day, which celebrates the life-changing impact of cochlear implants for deaf and hearing impaired individuals. So today we'll be talking about cochlear implants, a miracle and life-changing event for the deaf and hearing impaired individuals. On this occasion, we also had a pre-conference yesterday, which was a very successful event. Our chief guest for yesterday's event was Ms. Ira Singhal, Deputy Commissioner at North Delhi Municipal Corporation. We also had international guest of honors for yesterday's occasion, Mr. Hulusi Bhatti, who runs the deaf news shows in United Kingdom, and also Mr. Andrew Dragunov, a deaf Russian finger dancer who is known for performing incredible fingers art. He created alphabets in his own finger spelling way. For the yesterday's event, we also had paper presentation by rehabilitation field individuals and also speaker sessions.
25th February. International Cochlear Implant Day is celebrated all over the world to raise awareness among the people with hearing disorders about the benefits of implantation, changing life for better. And World Hearing Day is a reminder that hearing loss is a major public health issue around the globe. Highlighted today is the sufficient human and economic cost of untreated hearing loss and the need to act now for the future. It is clear that this trend is rising due to overpopulation, pollution, and of course that is aging. And it will take a collaborative effort from the government, accommodations, industry, health professional, and general public to improve future hearing health outcome. On World Hearing Day, the whole WHO reinforces the cost-effective actions recognized as a clinical step for addressing the impact of global hearing loss prevention. Hearing loss by protecting against loud sounds and identify and treating ear infection. Identifying hearing loss early through screening of neighbors, school children and adults over 50 years. Providing rehabilitation together. Today's international conference will provide an appropriate platform for all the academicians, intellectual researchers, scientists, special educators, general educators, audiologists, speech-language pathologists, doctors, therapists, rehabilitation social workers, psychologists, caregivers, and hearing aid and ear mold technicians. The conference will focus also on the multitude of the topics related to cochlear implants and implantable hearing devices. We hope to give an overview of what is going on in the field of rapidly developing field of cochlear implant. I would also like to share that the National Trust, this is what the conference is about, pre-conference yesterday, as Tanvi ma'am has already briefed about it, that yesterday pre-conference, a lot of speakers were there, and ultimately because we have got a lot of registrations, that is why we have to hold this pre-conference day, because of the speakers' registration. So that is what we were talking in the morning also, that we need to make collaborative efforts for that. So I would like to share that the National Trust, that is working for the welfare of the person with disability, that is Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, had also sent their good wishes for organizing ASHTACON 2020. And this is a green conference where we are working over here for that is the social cause also. We could say that it's a step only, a pebble only that is in the ocean, but yes, we are concerned and we are working on that. So without taking this time through the conference, we hope that the participants will be able to guide the children, parents and the trainees that are working in the special field as well as in the field of paramedical course, that especially we are talking about audiology. I strongly hope that all the distinguished guests gathered here today will offer their generous support and encouragement for the successful launching and continued growth in the field of cochlear implant. So once again, I wholeheartedly welcome our chief guest for the day and other eminent guests for the day and speakers, nevertheless, for this conference. So now I would like to invite our medical director, Dr. Anmol Arora sir, who would like to brief about the institute and the working in this field. Respected chief guest, Padma Shri Dr. Professor J.M. Hans, Mrs. Hans, our chairman sir, Dr. Ramkilash Gupta, chairman Tecnia Group of Institution, Mr. J.C. Gupta, former Assistant Director, Ali Jawar Jung National Institute of Hearing Handicap. Mr. V.P. Shah, former Assistant Director, Ali Jawar Institute of Hearing Handicap, National Institute of Hearing Handicap. Mr. B.P. Singh, audiologist and a renowned audiologist of Rohini area. And ladies and gentlemen, CRE participants, special educators, dear students, colleagues, friends and speakers. I welcome you all on this 5th international conference being organized by Ashtavakra Institute of Rehabilitation Science and Research, the ASHTACON 2020. So in the series of conferences what we have organized in last 10 years, we have more than 50, you could say, conferences, workshops, seminars, out of which 4 international conferences we have holded. And this is the 5th one, which is a green conference, what we are holding on the topic cochlear implant. Sir, this conference is accredited from Rehabilitation Council of India
and is a WHO registered event. In this international event, we are having participants, both national and international, and more than 350 participants are over there. Other than the CRD participants, we are having national and international speakers who would be deliberating on the topic of cochlear implant today, and they have already deliberated in the pre-conference what we had yesterday. Before going ahead with the conference, I would like to brief regarding Ashtavakra Institute. This institute, what we established in year 2009, is now a decade old, almost 10 years. Down the line, this institute became the first institute in North India which started with B.Ed special education program in 3 disability areas, that is autism, hearing impairment, and mental retardation. Not only this, in 2015, we became the first self-financing private institution to start Bachelor in Audiology, Speech Language Pathology program under affiliation of Guru Gobind Singh Indraprastha University, and became the first institute of Delhi to start this program as a self-financing institution. Other than this, the association is also running 6 diploma programs in various pan-disability area under the accreditation of Rehabilitation Council of India. Sir, we are also one of the A-rated institution by Directorate of Higher Education and American National Standard Institute by ISO 9001-2015. So not only this year in 2019, our first batch of BSLP passed out, in which we were having 100% placement for the student. And to have a versatile clinical exposure, what we are providing them is the versatile internship program under various hospitals, centers, and different institutions such as Ayush Mysore, RML Hospital, Max Hospital, Fortis Hospital, Akash Hospital. Then we are having tie-up with Amplifone, Listening Ears, and various other companies where our interns are placed. So not only this, recently we had an MOU signed with Rajiv Gandhi Cancer Hospital so that the student can get exposure for the speech therapy of the patients who have been operated for laryngectomy. So in the series of these collaborations, MOU, and the growth, academic growth, what we have never left the academic standard of the institute. In last 2 years, we have the toppers of GGS IP University from our institute itself who were the gold medalists. So to add on with these features, I would also like to brief regarding the Ashtavakra Rehabilitation Center. This is a super specialized speech and hearing center what we have developed in this institutional area of Rohini, and it is one of the super specialized center for speech and hearing in North Delhi, where we are offering early born screening, newborn screening, and various other audiological assessment and speech treatment. Not only this, we are also providing services for psychology, we are also providing services for OT-PT, and sir, also we are one of the specialized center for cerebral palsy students, what we are running at Ashtavakra Rehabilitation Center. So the topic ASHTACON, the ASHTACON 2020, the topic what we are having, the cochlear implant, was all requested by our faculty, as this is one of the topic what is, you could say, as in technical part, what we are looking forward for the discussion and for adding on knowledge to this conference. So our students were very much clear, like as in for the hearing aid, which is just an amplifying device. Say if we are having this mic, yesterday I told this is a mic, this is basically a hearing aid. But miniature of hearing aid, this mic system is a hearing aid. But when we talk about the cochlear implant, it is a kind of bypass surgery. So in the journal physics, it is a bypass surgery what we look. As in the dead ear, we just replace it, we'll skip it with the cochlear implant. And that is all what we are looking forward, as in with these kind of conferences, we can have briefing that what research is going on and where we are standing today in the medical field. I hope my students, my researcher, the CRE participant, and the scholar who are attending this conference would be really benefited with this conference. And I, sir, also hope that the deliberation which we would be making in these 2 days would be coming up with a very learned outcome for the conference. With the same, I request the entire faculty, and I even thank entire faculty and fraternity of Ashtavakra, which is working day and night since last, I could see, month, for making this conference a success, and I hope it would be a success. Thank you, thanks a lot, and best of luck. Thank you. We are so obliged to have our chief guest, Dr. J.M. Hans, otolaryngologist, with us today. Sir is here with his better half. It is a privilege to have you here, ma'am. Sir is the gold medalist from the prestigious institute PGI Chandigarh. He pioneered the Beria technique in cochlear implant surgery 15 years ago in India and has successfully
and has successfully operated more than 1600 cochlear implants. He is the first ENT surgeon in India to have started the auditory brainstem implant in children. He has mentored many ENT surgeons all over the India and the SAARC countries. He was the professor and head of Department of ENT at Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. Also, he has been awarded Padma Shri Award by Honorable President of India, Shri APJ Abdul Kalam, in the year 2005. We welcome you, sir and ma'am. Now I request Dr. R.K. Gupta, Chairman at Tecnia Group of Institutions, Delhi, and Anmol sir, along with other AI
words, sir. Thank you. Thank you for honoring me by Gupta sir and respected Hans and Gupta ji and J.C. Gupta, who was the warden of my institute when I was a student in 1986. I started my practice here in 91, and I am very happy to see Tecnia had reached such big place कि no one can imagine of this कि now the Tecnia is running such kind of wonderful courses here. So I congratulations to all of you, and thank you sir, Gupta sir, and being as a part of I'm here, and thanks to students. Now I request Gupta sir to kindly say a few words. I thank the Ashtavakra Institute for giving me this honor. My association with the institute is right from its inception. And basically, I'm neither an audiologist nor a speech therapist. I'm a teacher of the children with hearing impairment. And I started my career in 1972 as a teacher in a small school in Gurgaon. Later, I joined NIHH and retired from NIHH Delhi Center in 2010. And after that, I worked for 5 years in RCI as consultant of examination. And RCI gave me the responsibility to establish a National Board of Examination. And I did that, and I came out from there at 2015. Now, regarding this conference, yesterday I was seeing some paper where we had for blind a number of talking softwares where once you type but there was no reading software. If there is anything in the computer will read it, but the blind could not read the books. Now, from India, CSIR and one other company, they have come together and invented a reading machine. So you have just to scroll on that and it will keep on reading the text. So I think that will be very, very helpful for blind persons who were till date dependent on some reader. Similarly, the same way, the cochlear implantation is one part. The second part is if the proper utilization of the hearing, remnant hearing, and the implant is not done through therapy, so the implant will be not useful. Now, I think there is previous Prime Minister's brother, I.K. Gujral's brother, he got an implant after, say, nearly 50 years of his hearing, when he lost his hearing. And even after therapy, he could not utilize the implant. So after implant, therapy is very, very post-operative care, and therapy is very, very necessary. And that really changed the life of a person who get implant and the therapy after getting the implantation. I wish all the success to the conference. Thank you very much. Now I request Dr. V.P. Shah to kindly say a few words. Respected Chief Guest, Dr. Hans, Dr. Kailash Gupta, Adharniya J.C. Gupta ji, Mr. V.P. Singh, Madam, my colleagues, students. Really, this 5th international conference, good initiative by Tecnia. And I am also associated with Tecnia since beginning. And I have a great role to play in starting this BSLP, because under the same university, IP University, our Aliyah Arjun was running BSLP under government scheme. And this was the first. Many students that time, they were deprived, though they had money, they were capable of paying the fees, but they were not getting admission because we had limited seats in Aliyah Arjun. And this institute, they have started lots of work still we have to do. And really in Delhi, institute like this, many institutes are required in North Delhi. And Tecnia has all the capacity to start, and we should be all the audiologists and special educator
should support this Tecnia Institute to do the best and best, because this cochlear implant is such a device, such a thing which is reaching to unreached through the government scheme, through the Ministry of Social Justice and Empowerment. And our chief guest is one of the key person to start this cochlear implant in India through Ministry of Social Justice and Empowerment. And I have attended so many meetings with the sir, and he has clear concept how it should reach to the poorest to the poor, and it is reaching through Ali our Young National Institute. And one topic is also there, government schemes, and how these professionals, a special educator, a speech therapist after ENT, they can do, and even serving to the poor, how they can empower themselves, because this scheme is there, they can also get honorarium, their fees and all these things. Lots of things are there, and this cochlear implant conference that also here organized, it is really nice. I am thankful to sir, Dr. Kailash Gupta sir, and organizers. And Anmol Arora ji, aap kavita bole sir, really soft spoken, such a nice. I have also so much interaction, because the last so many years he was the in charge, he is in charge only. Really lots of things could be spoken about him. And I have seen a person, though he is a medical doctor, but he has lots of things to do in rehabilitation of different kinds of disability, and he has deep knowledge about it. And he is doing the best of the best. Thank you, sir. Thank you. We are very glad to have Charu ma'am here with us today. Ma'am, I request you to kindly come and say a few words. I'm very happy to be here today, because this subject is very dear to my heart. I'm not just physically present here just to accompany my husband, but you believe me, this habilitation is very, very dear to me, because I'm looking after in our own clinic these children who have been implanted, although it was not my subject. But being a mother, being a doctor, I can easily, pick up the topic, and whatever way I can do counseling to my children, I'm doing. So it's such a good feeling to be here today, and I wish all of you very good luck for future, because this subject really needs booster. And I wish great success to this conference and to this institute. Thank you. Now I request Dr. R.K. Gupta, Chairman at Tecnia Group of Institutions, Delhi, to kindly say a few words on the occasion of ASHTACON 2020. Dr. Hans, Chief Guest of the Day, Mrs. Dr. Hans, Dr. J.C. Gupta, Shri B.P. Singh Ji, Dr. B.P. Shah, other speakers and doctors, professors, Dr. Anmol Arora, staff members, students and delegates. जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, पर आई एम द पर्सन हियर जिसने हर सपने को पूरे होता देखा है। मैं 10th क्लास में था, बाई एनी फैमिली रीज़न मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया और मुझे साउथ इंडिया में कहीं जाना पड़ा। वहाँ जाके लगा कि जीवन में पढ़ाई के बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप किसी के लिए क्या कर पाएंगे, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सोचा कि अगर कोई जीवन में मौका मिला तो हेल्थ सर्विसेज में और एजुकेशन के सेक्टर में प्रभु हमें इतनी शक्ति देना कि कोई ना कोई हमें इसमें काम करने का मौका मिले। और एक छोटे से इंस्टीट्यूट से, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ स्टेज का ये हाफ पार्ट है, इतने से वो कॉलेज स्टार्ट हुआ। 1997 में साहब सिंह वर्मा जी ने जब दिल्ली में पहली आईपी यूनिवर्सिटी को प्लान करने का जो प्लानिंग की, उसमें 6 आईएएस ऑफिसर्स थे एंड आई वाज ओनली द पर्सन जो नॉन ब्यूरोक्रेट की तरफ से उसमें मेंबर बनाया गया।
हम लोग मिनिस्ट्री के पास गए, वहाँ हमने बहुत सारी प्रपोजल्स भेजी, जो पास हुई उसमें से दिल्ली के आज आईपी यूनिवर्सिटी के 108 कॉलेजेस हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर के अग्रवाल जी के अपॉइंटमेंट के लिए जो एफर्ट्स किए गए हुए, उसके बाद में आज यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी तरीके से कुछ लोग कभी कभी ये कहते हैं कि गुप्ता जी आप तो मालिक हो टेक्निया के, इसके उसके, ये जितने भी कॉलेजेस दिल्ली में चल रहे हैं, चाहे श्री राम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, ये कॉलेज है, कभी कभी ये जब कभी स्टार्ट हुए होंगे तो अभी ऐसे ही जैसे टेक्निया स्टार्ट हुआ ऐसे स्टार्ट हुए होंगे, और किसी रात को गवर्नमेंट ने उठा के एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो ये भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो टेक्निया है, चाहे अष्टवक्रा है, इसमें हमारा और आपका कुछ नहीं, और है तो सबका है, हम पूरे इसके भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हम सबकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई स्वप्न आपने देखा है तो वो केवल उसको शुरू कर देना से काम नहीं होता, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, कोई नाम होना चाहिए, तभी उसको शुरू करने का फ़ायदा है। टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ, 6 कॉलेज उसमें स्टार्ट हुए। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे पे 22 एकड़ लैंड से संस्कृत यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। आज 125 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी है, 22 कॉलेजेस उसमें चल रहे हैं, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और होटल मैनेजमेंट की, और बहुत सारे उसमें। अभी हमने 50 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का एक कोर्स शुरू किया है, रशियन गवर्नमेंट से ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके, वहाँ पे 50 एकड़ में हेलीपैड बन रहा है। इसी तरीके से जब अष्टवक्रा शुरू हुआ, इसकी छोटी सी मैं although it is not related with the topic, but मेरे मन में है कि मैं इसको शेयर करूं, कैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो जहां अष्टवक्रा इंस्टीट्यूट है, यहाँ एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था डिसेबल्ड बच्चों का, फ्री उसको पढ़ाते थे, और वो लॉयंस क्लब का के तौर से हम उसमें बहुत सारी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करने के लिए जाया करते थे। कभी कुछ वहाँ गड्ढे हुआ करते थे जिसमें छोटे छोटे सांप पानी के में चलते थे, जंग लगी हुई टीनें थी, टीनों के अंदर से बारिश के अंदर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। हम लेडीज़ इसमें सारी इसकी मेंबर्स हैं, हमारी मिसेस भी उसमें मेंबर हैं। तो उनकी जो चेयरपर्सन थी एक दिन मेरे पास आई कि भैया मेरी पर्सनल हालत कुछ ऐसी है कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी, और मुझे मेरे लाइफ में जितने भी आज तक इंसान आए हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इस काम को थोड़ा सा संभालोगे तो ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। हालांकि मुझे बड़ा लग रहा था कि डिसेबिलिटी का सेक्टर क्या मेरे लिए, मुझे कोई इसकी समझ नहीं है, ना कोई जानकारी है, लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। और ये अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छे कोलीग्स, अंबानी कभी अंबानी नहीं बन सकता, टाटा कभी टाटा नहीं बन सकता अगर उसके जो कोलीग्स हैं, साथी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो उस मेंटलिटी के ना हो, उस सिस्टम के ना हो। हमें डॉक्टर अनमोल अरोड़ा जी मिले, जिन्होंने पूरी टीम को खड़ा किया, और आज ये एक दिल्ली के अंदर एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट बन करके आया, नॉर्थ इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट बना। डीडीए की प्रॉब्लम हुई, गवर्नर साहब से मिले, ये हुआ वो हुआ, और ये सारे कोर्सेज आज स्टार्ट हुए। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उस स्टेज से हम यहाँ तक आ सकते हैं तो मेरा स्वप्न, मेरी सोच ये है कि डॉक्टर हंस साहब बैठे हैं और बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल्स लोग बैठे हैं कि हम फाइनेंशियल इस इंस्टीट्यूट पे कोई क्रंच नहीं है, आज भी हमारे पास बहुत सारा रिजर्व है, ठीक ठाक है, और आगे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर में या आप लोगों की मदद से एक ऐसे इसमें प्रोजेक्ट, ऐसे इसमें कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जो हम लाके दुनिया के किसी कोने में जा करके ये कॉन्फ्रेंसेस करें, और केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए कॉन्फ्रेंस करना नहीं, उसमें रियली सही मायने में जो नीडी लोग हैं, ज़रूरत के लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, बैठे विचार करें और गवर्नमेंट को या जो भी हमें फर्दर काम करना है वो काम करें, और इस इंस्टीट्यूट में भी ऐसी ऐसी चीज़ें स्टार्ट की जाए जो इस सेक्टर में एक मानवता के काम आ सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। यही मेरा स्वप्न, यही मेरी इच्छा, यही मेरी मन की भावना है। और मेरे जितने भी आज गेस्ट हैं, स्पेशली डॉक्टर हंस और मिसेस डॉक्टर हंस, पहले भी एक बार हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे आपने आशीर्वाद दिया था, आज भी आप आए। आल्दो कुछ मुझे लग रहा था कि ये जो अभी अगर कोई एक अच्छा पेंटर होता है जो पेंटिंग तो बढ़िया बना लेता है,
लेकिन उस पेंटिंग को सेल कैसे करना है, बाजार में बेचना कैसा है, उसको नहीं आता। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, एक अच्छे डॉक्टर तो हैं, ऑपरेशन बढ़िया कर पाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल को एक बढ़िया चलाना कैसे, ये एक मैनेजमेंट का काम है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमें इसमें काम करना है, आगे मिल के करेंगे। मैं बधाई देता हूँ पूरी उस टीम को, जो डॉक्टर संजना मित्तल और डॉक्टर अनमोल अरोड़ा जी और हमारे जो डायरेक्टर हैं, सबके साथ मिलकर जिन्होंने काम किया, और आए हुए हमारे सभी गेस्ट का बहुत 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 धन्यवाद। और मैं प्रे करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। Now I request Dr. J.M. Hans to kindly come and motivate all of us and also give the keynote address for the conference. रिस्पेक्टेड डॉक्टर आर के गुप्ता साहब, आप इंस्पिरेशन हैं हमारे लिए, सबके लिए। डॉक्टर अनमोल अरोड़ा, आपके लिए तो गीत गाए गए, बहुत मज़ा आया। डॉक्टर शलभ शर्मा हमारे बीच में बहुत एक रेनाउंड कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन हैं। मैडम संजना मित्तल, डिप्टी डायरेक्टर यहाँ की, जो मैं देख सकता हूँ बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सारा अरेंज किया। मिस्टर JC गुप्ता साहब, VP शाह साहब, PP सिंह साहब, प्यारे बच्चों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, it's an absolute honor, but I forget, I would also address my wife. She is my biggest critic, but my inspiration, Dr. चारू हंस। शायद उनके बिना मैं शायद यहाँ ना होता, और जब मुझे पद्मश्री मिला था तो सारी जो कॉन्ग्रेचुलेशंस थी वो इनको आती थी, मुझे नहीं आई थी। और जब मैं PGI चंडीगढ़ में था, तो जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मैंने इनसे आके कहा कि चलो आज मूवी चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कल मेरा एक एग्ज़ाम है छोटा सा, परसों चलेंगे। तो मेरे मुंह से निकल गया, आपको कौन सा मेडल मिलेगा, लेना है जो। तो कहने लगी कि 6 महीने के बाद इनका एग्ज़ाम था, ये मेरे से 6 महीने जूनियर थी। तो कहने लगी कि नहीं, अब 6 महीने तक आप मुझे दिखोगे नहीं। और फिर इन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया। तो जब ऐसी वाइफ जब आपके पीछे हों तो आप समझ सकते हैं कि बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। Ladies and gentlemen, my dear students, it's an utmost pleasure to be here today and it's my honor indeed. 20 साल पहले जब मैंने ये शुरू किया था कॉकलियर इम्प्लांट, और वेरिया टेक्निक आपको बताया गया, एक नई टेक्निक थी, तो मैं कभी कभी सोचता था कि will I be able to sustain this kind of a surgery in this field, but God's been very kind. अब 2,000-2,500 ज़्यादा से सर्जरी और पूरे इंडिया में और बाहर जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पे, जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। आप बडिंग ऑडियोलॉजिस्ट हैं, आप जाके काम करेंगे इन बच्चों के साथ। आज मैं ये कह सकता हूँ कि डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की डेफनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल एरिया ऑफ सेंट्रल डेफनेस विच वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड एट द मोमेंट, हम हर तरह की डेफनेस को ट्रीट कर सकते हैं। वो अगर मारिंगोप्लास्टी सर्जरी से लेके ऑडिटरी ब्रेन स्टेम सर्जरी हो, वी कैन ट्रीट दैट। बट इसके साथ एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो बहुत ज़रूरी है। पहली बात, कॉकलियर इम्प्लांट्स भी एक तरह के हियरिंग डिवाइसेस ही हैं। वो एम्पलीफाई करते हैं और ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, एंड दिस हैज़ टू बी इम्प्लांटेड वेयरएज दैट हैज़ टू बी गिवन। बहुत हम्बली आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जानिए कि ये बच्चों को हमें जल्दी से जल्दी इम्प्लांट करना होता है। दुनिया में 6 महीने 4 महीने में के बच्चों में भी इम्प्लांट हो रहा है, और हम इस देश में 7 से 8 महीने के बच्चे छोटे छोटे जो हमने इम्प्लांट किए हैं वो करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप उनको आइडेंटिफाई करें एज अर्ली एज पॉसिबल एंड देन ट्रीट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने बहुत इन 20 सालों में देखा कि कभी कभी एक प्रोफाउंड लॉस का बच्चा है, उसको MRI नहीं हुआ है और उसको हेयरिंग एड दिए गए हैं, स्पीच थेरेपी दी गई है। वो हमारे पास आया जब 5 साल का था, 6 साल का था। हमने उसका MRI किया तो उसमें पता लगा उसका कॉक्लिया ही नहीं है, उसका ऑडिटरी नर्व नहीं है। तो ये हुआ है हमारे साथ। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आपके पास कोई बच्चा आता है, आप या तो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजें, नहीं तो आप MRI खुद करा सकते हैं। एज ऑडियोलॉजिस्ट जो हेयरिंग एड्स दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको अगर वो लायक हैं कॉकलियर इम्प्लांट के, जब मैं कहता हूँ कॉकलियर इम्प्लांट के लायक,
आज समझ सकते होंगे जब 100 डेसिबल पे कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्सेज नहीं है, कोई रेसिडुअल हियरिंग नहीं है, तो there is no fun giving a hearing aid to this child. You may give it for a couple of months, but end of the day, this child would be benefited. And now we have virtual implants and electroacoustic stimulations. You will understand that in the same year, we have a cochlear implant and a hearing aid. So this is what level we have achieved in the last 20 years. और हमें ये समझना है कि आप भी बच्चे का MRI कराएं, उसमें देखें कॉकलिया है कि नहीं, और फिर इमीडिएटली किसी ऐसे आदमी के पास भेजें जो कि असेस कर सके कि इसको हेयरिंग एड लगना चाहिए या कॉकलिया। आप खुद भी इसके लिए बहुत सक्षम हैं, माहिर हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इफ़ द कॉकलिया इज़ malformed, if the nerve is a thin nerve or maybe a problem, this child would be benefited more with a cochlear implant than with a hearing aid. So वो hearing aid आप अगर देते जाएंगे तो बहुत valuable time, मैं नहीं कहता कि पैसे वेस्ट होंगे पेरेंट्स के, बट वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। और बच्चा माँ के पेट में सुनता है, शुरू करता है 7वें महीने के बाद, तो आप सोच सकते हैं जितना डिले हो रहा है उतना उसके लिए डिले हो रहा है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कॉकलियर इम्प्लांट इज़ ऑल्सो अ हियरिंग डिवाइस, बट इट हैज़ टू बी गिवन फॉर द राइट पेशेंट, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एज ऑडियोलॉजिस्ट भी अगर आप नहीं भेज सकते किसी ENT सर्जन के पास, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजना है ये देखने के लिए कि वो सब अंदर से ठीक है। छोटी सी और आपको इस बात में बात बताना चाहूँगा कि कुछ प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस के बच्चे होते हैं, वो पैदा ठीक होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी हेयरिंग लॉस होती चली जाती है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इनसाइड द कॉकलिया। वी हैव अ लार्ज वेस्टिबुलर एक्विडक्ट, अदर एबनॉर्मेलिटीज़, मॉन्डेनी डिफॉर्मिटी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी ज़रूरत है बच्चे की एट द एज ही इज़ लेटर ऑन, उसके लिए वो कम पड़ जाएगा जो उसके अंदर है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप जिस भी जगह हैं, जो भी डॉक्टर आपके साथ एसोसिएटेड है, उसको आप भेजें, वो देखे कि इस बच्चे को हेयरिंग एड्स लगने हैं, कब तक लगने हैं, और नहीं लगने हैं तो कॉकलियर इम्प्लांट कितनी जल्दी होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज से दैट 80% इज़ योर जॉब, 10% इज़ अ गुड सर्जरी जो हम करते हैं, 80% आप लोगों का काम होता है। और जैसे डॉक्टर RK गुप्ता साहब ने कहा, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने नॉर्थ में एक ऐसा सेंटर बना के। साउथ में बहुत सारे सेंटर्स हैं। मैं रहा अली अवर जंग का एग्जीक्यूटिव मेंबर और आयुष का एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट नॉमिनी रहा, और मैं देखता था कि जब मैं जाता था तो वहाँ पर बहुत हैं, नॉर्थ में नहीं था। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम and his endeavor and his this thing for bringing this to North India. हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे पास बहुत कमी है, और कॉकलियर इम्प्लांट और हेयरिंग एड में के बाद भी आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, हमसे कहीं ज़्यादा। हम एक और आप कम से कम 10 होने चाहिए, तभी उन बच्चों को आप उस लेवल तक ला सकेंगे। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो पैदा हो, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज मदर एंड द सोसाइटी एंड द स्कूल, वो अब्दुल कलाम बन जाए। तो हमें भी फेलियर्स मिलते हैं। हर बच्चा हम उसको 100% नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स कमिंग इन लेटर लाइफ। ऑटिज़म, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं जो अब हमें पता नहीं लग रही हैं। कितना भी हम कोशिश करें, नहीं पहचान पाएंगे कि ये बच्चे को आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगी। Yes, we have to tell every bit of thing to our parents, to tell them the truth, what to expect from the cochlear implant. हम कभी कभी सब चीज़ आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन तब भी वो रिजल्ट्स नहीं आते जो कि आने चाहिए, और वो हमारे हाथ में नहीं होता। यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट टू गॉड। कितनी भी अच्छी सर्जरी करें, कितना भी महंगा कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन कभी कभी वो चीज़ अचीव नहीं होती है, मे बी बिकॉज ऑफ एडेड डिसेबिलिटीज़, और पेरेंट्स ने ही ख्याल नहीं रखा। इतने सालों में, 20 सालों में, मैं जो सोचता था कि ये माँ बाप बहुत अच्छे होंगे और बच्चे का ख्याल रखेंगे, उन्होंने ही ख्याल नहीं रखा बिकॉज वो बिज़ी थे। और एक बहुत ऑर्डिनरी मदर ने, और हमारे यहाँ मैडम रितु नाकरा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ की, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि एक ऐसी माँ हो के उन्होंने कितनों को इस लायक बना दिया कि वो आगे चल के औरों को हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़
This is a job of total dedication, total involvement, and I'm grateful again to my wife who has left her job. She was professor and head of microbiology, and now she is with me. She looks after these children, and it is a pleasure to be here again. And it's a great honor to be here. और मैं आप सबको बहुत मुबारक देता हूँ एक बहुत अच्छे कॉन्फ्रेंस के लिए. Thank you very much. Thank you, James Hanser. It was really a pleasure that we had you over here, and today you have cleared so many doubts. First of all, I am so thankful that you have told us, because till now we had this perception that having hearing aid is better option than going for cochlear implant. So today we came to know that it is better that to have a cochlear implant rather than going for the devices. So we have a lot of children at our Ashtavakra special school, the ones who are suffering from this, and we have identified so many children through CBR activities also. So definitely the entire team, we are sure that we are going to work in this field and the children that we have identified, and we are surely going to guide the parents and keep a workshop for this, and we need your help also for that. So we are really thankful and blessed. I think so entire Ashtavakra staff, all the CRE participants and entire professionals, we are blessed to have you over here. So thank you so much on behalf of Ashtavakra Institute. Thank you so much, sir. Before we end the inaugural ceremony, I would request Dr. Professor Padmashri J.M. Hans, Dr. R.K. Gupta, Dr. Anmol Arora sir to kindly come upon the stage and felicitate the organizing committee of ASHTACON 2020. Can we please have you here, sir? Now I would request Ms. Jyoti ma'am to kindly come upon the stage and give the vote of thanks. She is a faculty member of AIRSR and the organizing committee member of ASHTACON 2020. A warm and graceful afternoon to our chief guest of honors, eminent speakers, management committee, worthy teachers, students, as well as one and all gathered over here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion of ASHTACON 2020. I, on behalf of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Science and Research and the entire fraternity of the institution, first of all, express my overwhelming sense of gratitude to the chief guest of honor, and speakers who spared some moment from their busier schedule to grace this conference and for giving their warm wishes and sharing the valuable information. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It's my honor to share the stage with you all. I am also very grateful to the management who provide us such opportunities like ASHTACON 2020 in plenty. I also extend my most sincere thanks to Almighty. Thanks a lot to one and all directly or indirectly involved in the program. Thank you all.